Dear friends, welcome back to the channel. We have a very special guest today, Disha Komal Sachin Gujrani. And there's a purpose behind taking the full name. क्योंकि the day I remember, जब दिशा उसके पेरेंट्स के साथ हमारे घर आई थी and I had just returned from a Hyderabad flight and I was very tired. बट जब भी मैंने उसके पेरेंट्स के आंखों में वो फीलिंग देखी ना, द फीलिंग ऑफ प्राउडनेस, मेरा पूरा टायर्डनेस खत्म हो गया था एंड आई वाज फीलिंग सो एनर्जाइज्ड लुकिंग एट हर पेरेंट्स आईज. So welcome Disha to the channel. Thank you so much for having me. Glad to be here. Yes. So जून 23 में जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था, यू आर नॉट ओनली वन ऑफ द 25% जो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड, बट यू आर आल्सो द ऑल इंडिया रैंक वन ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम्स. So were you expecting a rank first of all? No, I was not expecting a rank at the national level as such. It took 1 month to sink here throughout the country highest marks है because बहुत ज़्यादा बोलते हैं ऐसे धक्का बैठने वाली बात थी कि all India highest marks है because I'm not prepared very well. I was struggling with my subject till the day of exam actually. So can you just briefly share with us ki how was your journey up to CA Foundation, like your schooling, family background? I did my schooling from Nirmala Convent High School in Nashik. And after that, I had taken up commerce in 11th, जिसमें भी I was very confused till मतलब 12th के admission होने के पहले तक I was on the words commerce लूँ commerce लूँ arts लूँ, but it was somewhere written in the destiny. और फिर even CA I was not even interested. I thought इतने लोग CA करते क्यों करना है? I just attended the demo lectures because they were free, and somewhere it all just made me ring. Right. So, to the audience, we share the same school. I am also from Nirmala Convent High School. Like, let me tell you one thing. When I visited school on 15th August, so all the teachers were very proud for Disha or for her parents. But school भी पूरा इतना teachers सब लोग इतना proud feel कर रहे थे ना कि Disha has secured an all India ranks. Today we are also launching a logo of our channel, and this is the logo. We make an attempt कि we can help to all the aspirants to the extent possible. So दिशा ने जब भी ये देखा, तुरंत वो तैयार हो गई थी कि yes, we'll have this interview to guide the students, and we are specially having her here for from CA Foundation perspective, ताकि वो हम सबको गाइड कर सके कि how exactly the subjects are to be planned and how the exam leave can be strategized. So thank you once. One thing I'd like to add about this, I actually starting similar from my childhood, I always believed that there was one doha I heard कि सूर सती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जात. And I guess you are doing exactly what the doha means. You are helping people in what they are doing, so kudos to you. Yes. और दिस ऑल स्टार्टेड विद दैट ओनली कि अगर मेरे बोलने से या फिर हैविंग द गेस्ट लाइक यू ऑन द शो, अगर किसी को फर्क पड़ता है कुछ भी लाइक फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव, तो व्हाई नॉट ना. लाइक इट कैन बी स्प्रेडिंग पॉजिटिवनेस और लाइक हेल्पिंग फ्रॉम टेस्ट सीरीज पर्सपेक्टिव और गाइडिंग लाइक हाउ टू राइट, हाउ टू प्रिपेयर, देन व्हाई नॉट. So all this started with that motto only, and of course it is a passion of mine to counsel, to help students from every possible way. So first question, like how did you plan your subjects? Like there are 4 subjects in CA Foundation, so how was your plan? First of all, doing the lectures properly with logic. It's it's the most important thing. If I have to bifurcate, then 80% of my, not 8, but 70 to 80% of my studies I've completed in my lectures. Because if you do the lectures properly, you don't need to revise much. रिविजन में बहुत कम टाइम जाता है, तो you have more time to research for new material कि इससे अलग और क्या क्या पूछ सकते हैं. Okay. But at foundation level, ICI sticks to its module. MTP, RTP पास एग्जाम्स के बाहर कुछ नहीं पूछते वो लोग, especially for accounts and Okay. law. हाँ. तो फिर doing the lectures properly is very important. After that, regularly, मतलब रोज इतना बहुत ज्यादा पढ़ना ऐसा कुछ नहीं. I used to study only for the timely tests which we used to have, and full-fledged study I did in the last 2.5, 3 months. Okay. But if you do, one of the most important thing is doing the lectures properly. If you do them properly, I don't think you need to put much efforts. Right. And afterwards, revision for test, not leaving any test because you are not prepared. Even if you are half prepared, go attempt because you will get to know what you did. Was it actually, मतलब worth your preparation?
Was your preparation worth the test actually? राइट राइट। और एक्चुअली वो मतलब उसका इंटेंट भी वही होता है ना, टू राइट अ पेपर इज टू टेस्ट। मतलब काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अरे प्रिपेयर ही नहीं हुआ तो टेस्ट कैसे लिखूं, फिर आएगा ही नहीं, तो पर जब तक हाँ लिखेंगे नहीं एग्जैक्टली। तब तक समझेगा कैसे ना। सो दैट इज द वेरी इंटेंट ऑफ राइटिंग एनी टेस्ट, सो राइटली सेड। सो लाइक हाउ मेनी मंथ्स डिड यू गेट फॉर लाइक पूरा पर्सनल स्टडी लीव के लिए? Study leave, we completed our boards in mid March. उसके बाद 10 days we had holiday. Afterwards जो बचा हुआ portion था, we completed by second week of April. ओके And then April half month, May and June, 2.5 months full credit थे पढ़ाई के लिए. And ओके। also mid March to mid April we had only 2 or 3 lectures. तो फिर more than half the day we used to have for self study. राइट राइट राइट। एंड अभी जो दिसंबर का एग्जाम्स होने वाला है दैट इज फ्रॉम 31 दिसंबर। हाउ वुड यू गाइड टू द स्टूडेंट्स लाइक कि अभी ये 3 3.5 महीना जो है तो इसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए दीज 4 सब्जेक्ट? First of all, if you have any lectures are pending, then complete them before. ओके And afterwards, start with your weakest subject. If because mostly we find law difficult, so make a point that whichever subject you find the most difficult now, do it the first thing when you get up after you meditate, get fresh and all that. First thing, start with that subject. After that, I used to study for 40 to 50 minutes in one sitting. I did not sit for more than that. So take a break. बीच में कुछ टाइम पास करना है तो वो करो, या फिर चेंज द सब्जेक्ट, अगेन कम बैक टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. ओके And especially for law, multiple readings are must because otherwise you won't be able to reproduce the language which ICI uses, and it is very much important. Though we say कि word to word नहीं लिखा जा सकता, but you have to use their phrases because otherwise it's not easy to score marks. राइट राइट। तो And मतलब आपका uh, यस along with law, you can do one of the MCQ subjects also, especially with eco and VCT because it's very scoring, and 4 to 5 readings of the module and you can easily score more than 75 80, and it helps to drag the aggregate also. ओके ओके। और ऐसा बोला जाता है कि अगर सीए फाउंडेशन रह जाएगा तो मैथ्स के वजह से रह जाएगा, तो मतलब जो वो एक मैथ्स का डर है या फिर अक्रॉस दैट इज कॉमन अमंग्स द ऑल स्टूडेंट्स। सो आई वांट यू टू ले अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन मैथ्स कि मैथ्स को कैसा प्लान कर Maths, सकते हैं या फिर वो maths डर was कैसा first. निकाल सकते हैं अपन में। Maths was my most favorite subject, also because of the faculty, because he was. मतलब we used there are these formulas of simple interest, compound interest. Also, we study them at school level, but we don't know the logic. We just mug up the formula and we solve. But he used to teach right from the scratch. So we know from where did the formula come. So when you know why it is like that, then solving is not a big issue. So being very clear with the concepts is the first thing. If you are not, then go on YouTube. You'll find many teachers. Maybe there they can help you with that. Logic concept clear चाहिए. मैथ्स के लिए एक अलग से नोटबुक बनानी थी जहाँ पे all the formula you note down with ओके। logic, and you note down all the theory points. That's के जो mostly जो theory stats की theory, if you do it well, 25 marks तो कहीं नहीं गए because वहीं से कुछ ना कुछ आने वाला है. तो फिर first of all start with stats, do the AQB, set A, set B, set C, everything for stats because stats is very scoring. It won't, and it is very much. It does not consume much time also. Once you cover with stats, go for maths, and in maths also time value of money because that chapter uh, um, रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत प्रैक्टिकल है वो और कहीं भी काम आने वाली चीज है. ऑल्सो इट हैज अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ 10 to 15 marks. So complete stats first, then go with time value, and then you can start with sets and all. And LR, I would suggest that solve the module, and all we have all the MTPs and RTPs available on Google. So LR you can, that much is enough, I guess. And also, if you have time, which you don't mostly, then you can refer to the scholarship digest also. Because I remember मैंने LRP पढ़ाई की ही नहीं थी पूरा फाउंडेशन में. I gave it on the basis of scholarship, and it's not very difficult. ओके It's, you can score 12 to 15 आराम से in LR. राइट राइट राइट। और अभी जैसा अभी 3 मंथ्स बाकी है टू द सीए फाउंडेशन, तो इसको कैसा प्लान किया जाए? मतलब जैसे चारों सब्जेक्ट्स है तो आप चारों सब्जेक्ट्स रोज पढ़ते थे या फिर हाउ डिड यू डिस्ट्रीब्यूट द सब्जेक्ट्स, उसको स्केड्यूलिंग कैसे किया था? I used to study every subject every day because वो monotonous हो जाता है तो फिर बोर होने लगती है वही चीज बार बार इसलिए.
तो Right. मॉर्निंग में आई यूज टू स्टडी इन द मॉर्निंग. तो आफ्टर आई गेट अप फर्स्ट 2-3 hours डेडिकेटेड फॉर लॉ, अच्छे से प्रोविजंस करना. एंड आई वुड सजेस्ट कि पहले एक आध 1.5 महीना आप लगे तो सिर्फ रीड करो बार बार, पर बाद में कीवर्ड्स लर्निंग स्टार्ट कर दो, मेन में इंपॉर्टेंट सेक्शन याद करना चालू कर दो. इट इज गोइंग टू हेल्प यू. Okay. Also, after that, if you take a break of half an hour, 1 hour, also after that, do maths. Um, First, start with the module and in the sequence which I told, Okay. and after that, in the mid of the day, जब बोर हो रहा है या फिर इच्छा नहीं होती पढ़ने की, नींद आने का टाइम हो जाता है, हाँ, जो लंच के बाद का एक पैच होता है डूमी डूमी में. हाँ, तो फिर लंच के बाद तो भी हाफ आवर डोंट सिट फॉर स्टडी बिकॉज देयर इज अ हाई चांस यू फॉल asleep. And after that you can just walk around, fool around with your parents, मतलब you can trouble them कि नींद से बाहर आ जाओ. और फिर sit for eco I would suggest. And इको के लिए बार बार एक तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखो बिकॉज इट इज एमसीक्यू, तो कहीं से भी आने वाला क्वेश्चन कितना भी रीड कर लो, याद तो नहीं रहेगा सब कुछ. जितना लॉजिक क्लियर है उतना ही यू विल बी एबल टू सॉल्व अच्छे से. तो फिर इको अच्छे से करो. एंड बीसीके में मेन चैप्टर 3 जो हमारी कंपनीज है, वो आई वुड सजेस्ट कि वी आर सम अराउंड 40 कंपनीज, सो डिवाइड देम इन अ वीक, 5 to 6 कंपनीज एवरी डे. और रोज उतनी ही 5 6 कंपनीज, एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार शाम को पढ़ लो, एक बार रात को पढ़ लो. दैट इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज एट द एंड वो 40 कंपनीज का मोटो, विजन, चेयरमैन सब सब याद रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो ब्रेक इट एंड री रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. For Right. BCK, other topics in BCK are quite easy. You can answer them on the basis of GK also. Right. Right. And Right. for accounts, suggested that module एक दो बार अच्छे से solve कर लो with the EMD pattern, मतलब easy, medium, difficult, अपने हिसाब से क्या लग रहा है वैसे मार्किंग करते चलो. 2 या 3 बार अच्छे से पूरी मॉड्यूल हो जानी चाहिए. And solve all the RTPs. Once you solve the RTPs ना, MTP of each chapter is quite repetitive. तो वो एक बार आरटीपी हो जाता है, एमटीपी पूरा करने की जरूरत नहीं है. एंड फॉर अकाउंट्स एमटीपी, आरटीपी, मॉड्यूल एंड पास का एग्जाम, इसके बाहर से कुछ आता नहीं है. तो इफ यू डू दिस प्रॉपरली लॉजिकली तो फिर 80 के नीचे मार्क्स, मतलब इट्स इजी टू अच्छा. स्कोर अबव 80. And this all material is more than sufficient जो इंस्टीट्यूट का है. So मोर sticking देन to the सफिशिएंट. material. Right. आईसीआई डजंट आस्क बियॉन्ड दैट, Okay. मतलब एटलीस्ट ऑल द पीपल दैट आई हैव सीन. हाँ, हाँ, हाँ. और फिर लाइक दिन में करीब करीब कितने घंटे हो जाती थी पढ़ाई? जब लेक्चर्स होते थे तो वी हैड लेक्चर्स फ्रॉम 8:30 to 12:30 ट्वेल्थ के होते थे, और फिर 1 to 6, 1 to 7 फाउंडेशन. तो फिर दिन तो पूरा निकल जाता था एंड यू आर एग्जॉस्टेड एनीवेज. So I used to go to bed early and I used to get up in the morning 4, sometimes 5. उतने 3-4 घंटे एकदम इफेक्टिवली पढ़े उनसे, क्योंकि दिन भर फिर से नहीं होने वाली. क्लास पे जाओगे, मस्ती वगैरह करोगे, थक जाओगे, आने राइट. के बाद कुछ नहीं होने वाला. हाँ, एंड इट्स यू हैव द टाइम ऑफ लाइफ, तो वर्थ भी है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, छोड़ो, मजे कर लो. तो फिर while the lectures were on, I used to study for 3 to 4 hours. बहुत ऐसे टेस्ट है और पढ़ाई नहीं हुए तो I used to stretch that, otherwise no. And जब पूरा दिन मिलता था पढ़ने, I used to study for around 8 to 9 hours. 8 to 9 hours. ओके. 7 hours मोस्टली, बट कभी कभी ऐसे बोलते हैं टेस्ट है ही अगले दिन तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा. फिर 8 to 9 hours मैक्स. राइट, राइट, राइट. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 8 9 घंटे भी ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया जा सकता है, जो भी ये वीडियो को सुन रहे हैं. इट इज नॉट नेसेसरी टू स्लॉग फॉर लाइक 15 hours 18 hours. 8 9 hours भी इफेक्टिवली अच्छे से पढ़े, सो यू कैन डेफिनेटली अचीव अ रैंक. राइट दिशा? हाँ, इट्स अबाउट इफेक्टिवनेस, क्योंकि 10 घंटे बैठोगे और 3 घंटे तक लॉस करोगे, इससे अच्छा बेटर जब बैठो तब फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठो. Right, right, right. And you also mentioned about meditation that you spend time in also in spiritual and religious practices also. So वो कैसे help किया, या फिर why are you more inclined towards that? Actually, I had, मतलब till 10th I was not much spiritually inclined, honestly. But after I got connected to Jainism, my entire personality has समझे ना upside down पूरा हो गया है. मतलब till 10th I was very ऐसा, समझे ना, egoistic थोड़ा ऐसा, हाँ it's me, head girl हूँ स्कूल की, टॉपर थी, बैट्स की, Right. like that हाँ, me. हाँ, हाँ, But हाँ. after I मतलब started getting knowledge of Jainism, I realized that your existence is very minimalistic. It's not that तुम नहीं रहोगे तो दुनिया रुकने नहीं वाली है. It's going to go on. So become down to earth firstly. Also, मतलब there are many good qualities which I imbibed after I became spiritually inclined, and which helps you a lot in studying. It gives you clarity of thought. You become concentrated. क्लटर जो होता है दिमाग का वो साफ हो जाता है.
So I remember even till a week before my exams, I used to go to Stanak every day for the Okay. promotion. If I can't sit for 1.5 hour lecture देखो तो भी आधा पौना घंटा एक I stay there क्योंकि वो half hour gives you energy to study for next 8 to 10 hours, Right. and Right. it has a magical effect. You can't describe it, but it helps you a lot academically, personally. बहुत ज़्यादा help करता है. Right, right. Great, great, great. So, like, depending upon your belief or your faith, आप जो भी मतलब religion को follow करते हो, तो it gives a boost. हाँ, you should have one thing apart from studies which and मतलब which pushes you so much कि अरे नहीं ये तो करना ही है तो फिर. Right, And when you are so much interested in something, no, the other thing which you are doing which you are not much interested in, but you know you have to do them, it somewhere gives you energy कि हाँ कर लेंगे, करना ही पड़ेगा अभी. अगर एक चीज अच्छे मतलब दिल से एक चीज करे तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि दूसरी चीज नहीं भी है अच्छा तो भी कर कर लेते हो आप. definitely, definitely. The time you spend other than studying defines what your effectiveness is going to be while studying. Right, So right. So, और क्या करते थे आप पढ़ाई के साथ? Like going to Stanak and meditation and I used to party a lot with my friends actually. बहुत ज्यादा. And I'm a complete extrovert. मतलब मैं क्लास के रिसेप्शनिस्ट से लेके ओनर तक सबके साथ इतने गप्पे मारे होंगे मैंने एग्जाम के 10 दिन पहले तक. ऑल्सो इफ आई गो फॉर राइटिंग अ मॉक टेस्ट आई यूज्ड टू सिट एंड आई टॉक क्या चल रहा है घर पे क्या कुछ नहीं मजे में सब. मतलब टॉकिंग टू पीपल मतलब यू ऑल्सो गेट एम्पैथी भी एक डेवलप होती है. You understand human psychology, and I was very much inclined towards psychology. That is why I wanted to shift from commerce to arts. तो हाँ, फिर हाँ, टॉकिंग विद पीपल बहुत ज्यादा मतलब इवन वन डे बिफोर माई एग्जाम इट वॉज माई बर्थडे एंड आई गेस उस दिन मतलब अगर मुझे 100% सिलेबस कवर करना था मैंने सिर्फ 30-35% ही किया है उस दिन क्योंकि यू नो आई एम सो टॉकिटिव दैट मुझे एक जन सिर्फ हैप्पी बर्थडे विश करने भी कॉल करेगा 8-10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे. तो फिर talking to people. I used to read books. Last में इतना नहीं किया, but I used to love reading. I used to write poems sometimes, which I left 2-3 months back, correct. unfortunately. Hmm. And and sometimes Instagram, which I disabled for a month before exams, but कभी तो भी I used to open time pass के लिए. हाँ, we also have a small surprise at the end, तो वीडियो के एंड तक बने रहे. And yes, like Disha, like I am also very similar to you in this case. Like I also like to talk to a lot of people, and this is one of the reason I'm having such podcasts. And of course, matlab, human psychology is a core of interest to me. Human psychology, philosophy, I'm more inclined towards this. So great. और फिर अभी मतलब ऐसा कभी पढ़ने का मन नहीं होता था या फिर एक काइंड ऑफ ऐसा. मतलब मन नहीं होता ना तब मत बुक्स के पास ही मत जाओ क्योंकि हम्म, मन मार के पढ़ना मतलब जीरो एफिशिएंसी के साथ पढ़ो तो मतलब नॉट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन बट 12th के वक्त ऐसा हुआ था कि बोर्ड्स के कैसे वी डोंट स्टडी फॉर बोर्ड्स थ्रू आउट द ईयर और लास्ट के एक महीने में पूरा प्रेशर आता था पढ़ना ही है. तो राइट. फिर एक पल जब नहीं इसके आगे नहीं होगा तो दैट डे आई यूज्ड टू मतलब छोड़ ही दिया पढ़ाई. उस दिन नहीं पढ़ना है बिकॉज इफ यू हम्म, मन मार के इफ यू स्टडी नो यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी इफेक्टिवली एनीवेज वो टाइम वेस्ट ही होने वाला है. तो उससे अच्छा है डू थिंग्स व्हिच यू लाइक मतलब वॉच मूवीज सीरीज इंस्टाग्राम टॉक टू योर फ्रेंड्स. राइट, मन राइट, नहीं होगा तो मत पढ़ो बट दैट डजंट मीन कि कभी मन बनाओ ही मत. वैसा एक दिन ब्रेक लेगा तो फिर बाद में गेट बैक. राइट, राइट, राइट. और ऐसे क्या फैक्टर्स थे विच केप्ट यू इंस्पायरिंग, विच केप्ट यू मोटिवेटिंग, विच केप्ट यू कीप गोइंग? Most important factor actually was my coach, my sir. राइट, बिकॉज मेरे पेरेंट्स दे आर नॉट मच कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है तो घर पे ऐसा माहौल नहीं था कि पढ़ो. तो आई वॉज ऑल्सो वेरी चिल अबाउट माई स्टडीज. मैंने लास्ट के 2-2.5 महीने भी इसीलिए पढ़ाई की थी बिकॉज ही वांटेड मी टू स्टडी. ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल यू डोंट स्टडी व्हाई डोंट यू स्टडी. मतलब छोटी छोटी बात पे यूज्ड टू टेल मी नहीं अभी पढ़ना है जब मस्ती करनी तब मस्ती करो बट पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो. राइट. Actually, he was the reason. He and all the other faculties were the reason I used to study. And matlab, throughout the year also, if I studied for the test also, I used to take them very casually. पढ़ के जाएंगे तो चुपके मार देंगे. But they kept it. They made it a point कि नहीं पढ़ाना ही है इसको ये नहीं सुनती है तो they are very helpful actually. All not only these teachers actually, teachers till today मतलब स्कूल के कोचिंग के रहो कोई भी रहो
It was all because of my teachers, honestly. Teachers and parents. Mostly teachers. My parents are very sad about studies. So teachers, but they made it a point that I should study, which is why I studied. Right. True. It's very true. Like teachers play a very important role in shaping us, nurturing us, and for our growth. So yes, we are like gratitude towards them. And maybe एमएसए में था, so I know these like all faculties जिस तरह से help करते थे, boost करते थे पढ़ाई में या फिर एक गाइड करते थे, और उसके साथ मतलब हंसी मजाक भी होता था, ऐसा ही नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बहुत मतलब I always said this in all my interviews. हम पढ़ते थे, हम मस्ती भी करते थे, हम पढ़ते पढ़ते भी मस्ती करते थे. राइट We had राइट that time, मतलब बोलते थे 2 साल वो कॉलेज लाइफ, क्योंकि हम लोगों ने इतना देखा नहीं था, पर 2 साल जो मस्ती मजे की हमने क्लास में, पढ़ाई भी की थी, पर बहुत बहुत मस्ती करते थे हम लोग. कभी किसी पे प्रैंक करना हो, ट्रिक जाना हो, मूवीज देखना हो, कैंपिंग कैंपिंग करना हो. वो जो हंसी मजाक में पढ़ाई होती है ना, वो सबसे अच्छी होती है, बेस्ट होती है, वो याद हंसी भी। मजाक एंड ऑल्सो ग्रुप स्टडी बिकॉज इट मतलब माई केस इट हेल्प मी अ लॉट. राइट राइट. Disha has written a poem, and I request Disha to please recite it for us. So the title says this or that. Each of us alone creates the life we get to live. The quality of life depending on whether we chose to take or to give. Whether we were friendly in our approach or were we argumentative, whether it was the positive we focused upon or was it the negative. Each one of us alone indeed creates the life we get to live. The quality of life depending on whether we were passive in our relationships or were we active. Whether our cornerstone was to begrudge or was it to forgive. Whether we were vague in our behavior or were we informative. Whether we were of opposing nature or were we supportive. Indeed, yes, indeed, each of us alone creates the life we get to live. Great, great. मस्त थी poem. So thought provoking. So like coming to the last part, like any last piece of advice to our audience. One advice I like to give is that I was not much consistent in my studies. I made a lot of mistakes during my preparation, so I'm sharing those so you can learn from them. And if a student like me who did not sometimes did not even listen to teachers, मतलब जब उन्होंने पढ़ने बोला था तब बाहर आके कुछ पूछ रही होती थी मैं कॉलेज रोड पे, ऐसे स्टूडेंट अगर अच्छा स्कोर कर सकता है तो यू आर मच मच बेटर, यू कैन स्कोर वे बेटर देन आई डिड. एंड इफ किसी का अटेम्प्ट रह चुका है तो you know you always whenever you give it the second time you are in much a better version of yourself, and you're because you have seen failure now, you are more experienced than the one who has cleared it in one go. So you have tasted failures and you are one step ahead than that person because you have more maturity. So give it your best. कुछ लोड वोड लेके नहीं करना है, एकदम रिलैक्स लेके पढ़ाई करो बिकॉज इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ द वर्ल्ड कि ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो गया तो प्रॉब्लम है. तो गिव योर बेस्ट, रिलैक्स करके पढ़ो. और ऑल्सो पेरेंट्स डोंट प्रेशराइज योर चिल्ड्रन बिकॉज दैट इज वेरी मच नेगेटिव. And yes, thank you so much for having me. Congratulations for your new logo. Thank And you. all the best for all the aspirants. Thank you so much. Thank you so much, Disha. Being an all India rank, you are so humble, and thank you for guiding us, motivating us. Surely, मतलब जिनका who did not clear, तो ये attempt में हो जाएगा. Just like have a positive approach and a right approach maybe to clear this exam, and And definitely. manifest what you Right. want. So as you think you shall get in your life. Yes, thank you for your wishes for the channel and the logo. I definitely will Well keep wishes trying to to all guide. your well wishers. Yes.